since you are coming out with an IPO, you'll have new investors, new shareholders. They would always like to hear about the vision of the promoters. So give us a 5-year vision or a 3-year vision. Where did you want to take Paramount to? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक नॉक्स कालापुर महाराष्ट्र से। मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स लिमिटेड में, जो कि स्टील फोर्जिंग्स में है। जी हाँ, आप जो मेरे तरफ चारों तरफ प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, यही प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी ने ऑलरेडी SME में अपना DRHP फाइल किया है और बहुत जल्द IPO लेके आने वाली है। और इस IPO प्रोसीड से वो क्या करने वाले हैं, जानेंगे मिस्टर अली से बात करते हुए। मिस्टर अली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं मिस्टर अली से। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, कंपनी के फॉलो कीजिए, स्टॉक नॉक्स में सर्च कीजिए और जानिए कंपनी क्या करता है, और जुड़े रहिए कंपनी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अली से। Hello sir, how are you? Hi, very well, thank you. Nice to meet you. Same here. Yeah. Welcome to our plant. Yeah, thank you so much and congratulations on filing for the IPO. Thanks a lot. So we would like to see your factory और जानने की कोशिश करेंगे आप क्या करते हैं। तो पहला प्रश्न सर हमारा ये रहेगा, आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए, आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? Okay. So basically we are manufacturing flanges. Okay. जो ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में लगते हैं। Okay. उसके एप्लीकेशंस मेनली पाइपिंग और कोर पाइपिंग में है। अच्छा। एज फार एज आपका हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स, इक्विपमेंट्स, हर जगह पे जहाँ पर भी प्रेशर पाइपिंग रहता है, क्रिटिकल एप्लीकेशंस है, सभी जगह पे आवर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड। सो हम इसे फ्लैंजेस बोलते हैं, राइट? करेक्ट। सो ये इसका एक्चुअल और थोड़ा डिटेल में हमें आप बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? हाँ, सो क्या होता है कि कोई भी ऑयल एंड गैस हो या पेट्रोकेमिकल है या वाटर लाइंस है, स्टीम, गैस, व्हाटएवर, तो हर किसी को ज्वाइन करने के लिए फ्लैंज इज़ द की पाइपिंग कंपोनेंट टू एक्सटेंड एंड ज्वाइन द लाइन। उससे रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ बढ़ती है पाइपलाइन की। तो दिस इज़ अ कमोडिटी विच इज़ यूज्ड मेनली इन ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड ये बनते हैं वेरियस प्रोसेसेस से, प्लेट्स से बनते हैं। फोर्जिंग इज द मेन प्रोसेस। यस, फोर्जिंग इज द मेन प्रोसेस थ्रू विच हम इसे बनाते हैं, जिससे उसे स्ट्रेंथ और हर प्रॉपर्टी मिलती है जो लाइफ बढ़ाती है प्रोडक्ट लाइन की, और उसको स्ट्रेंथ देती है कि जो भी एप्लीकेशन में वो यूज़ हो रहा है उसके लिए उसको वो सेफ यूजेज के लिए लाइफ देती है। तो थोड़ी सी सर अब हम प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द रॉ मटेरियल दैट यू यूज? सो रॉ मटेरियल जो भी हम यूज़ करते हैं, दीज आर ऑल अलग अलग ग्रेड्स में आते हैं। जैसे कार्बन स्टील रहता है, स्टेनलेस स्टील्स है, एलॉय स्टील्स रहते हैं, हाई सुपर एलॉयज रहते हैं। तो हर डिफरेंट ग्रेड्स में ये स्टील्स आते हैं, कम फ्रॉम रेप्यूटेड मिल्स इन इंडिया एज वेल एज सम मिल्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। वंस दिस रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टील, यस, दैट इज राउंड्स आते हैं, बिलेट्स आते हैं, इंगट, these are the products। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं आप उसको? So, सबसे पहला स्टेज आ जाता है कि जैसे इंस्पेक्शन से क्लियर हो गया तो फर्स्ट प्रोसेस आता है कटिंग का। तो उसको हम लोग कट करते हैं। जी, तो कट करने के बाद वेट एंड वॉल्यूम के हिसाब से हम उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं हीटिंग के लिए। ठीक है। एक बार फर्नेस में उसके टेम्परेचर्स पे बराबर से जब जॉब हीट हो जाता है, वहाँ से आ जाता है फोर्जिंग के लिए। ठीक है। तो फोर्जिंग का ऑपरेशन होता है बेसिकली हैमर्स और प्रेसेस पे। ठीक है। वहाँ से उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसका ट्रिमिंग हो जाता है या रिंग रोलिंग पे जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, कौन सा जॉब कैसे बनना है। तो
इसके बाद ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो जाता है, ऐसे जैसे हम बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, थोड़ा बताएं इसके बारे में। तो फोर्जिंग के बाद जो प्रोसेस होता है सबसे क्रिटिकल है वो है हीट ट्रीटमेंट का। हीट ट्रीटमेंट, यस। तो वो एवरी जॉब जैसा जैसा प्रोड्यूस होता है उसके बाद उसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट का प्रोसीजर दिया जाता है। वहाँ उसके बाद टेस्टिंग होता है कि वो जॉब कंप्लाई करता है या नहीं, नेशनल इंटरनेशनल सभी स्टैंडर्ड्स को, उसके जो स्पेसिफिकेशंस है उसे मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार वो कंप्लायंस के बाद वो प्रोडक्ट को फिर हम वो बैचेस और वो टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दे देते हैं। ठीक है। तो देन इट गोज थ्रू द मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट लूँ, अगर हम बात करें इसको, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, और आपने जो प्रोसेस बताया उसी तरीके से ये बना है जी। अच्छा, ये वाली प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप अगर कोई यूसेज बताएं हमें तो। सो देखिए, ये बेसिकली ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले पे दिए हैं। ठीक है। अभी जो बेसिक हमने जैसे जब बिजनेस स्टार्ट किए हुए थे तो देयर आर सर्टेन बेसिक फ्लैंजेस जो नॉर्मल पाइपलाइंस और हीट एक्सचेंजर्स और जो भी इक्विपमेंट्स में लगती है। तो उनका एप्लीकेशन इज वेरी क्लियर, वो एक एंड पे वेल्ड होती है, उसके बाद में गैस्केट्स और बोल्टिंग होके वो पाइपलाइन बनती है या जो भी जिधर भी एप्लीकेशन है। उसके बाद हमने जैसे जैसे थोड़ा एक्सपेंशन करने के बाद वी डेवलप मोर, तो जैसे हमने थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए विच इज़ अगेन ऑयल एंड गैस रिलेटेड। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे तो ये बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और हीट एक्सचेंजर्स में लगते हैं। ये हीट एक्सचेंजर्स में लगते हैं। यस। सो ये बड़े बड़े जो हीट एक्सचेंजर या तो वेसल या बॉयलर्स रहते हैं, ये उसके ऊपर ये दीज आर कॉल्ड सेल्फ रीइंफोर्स्ड नोजल्स। ओके, नोजल्स। दिस वन सो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड क्रिटिकल इक्विपमेंट व्हिच इज अगेन वो वेल्ड हो जाता है, वहाँ से पाइपलाइंस ड्रॉ होती है। सो आई कुड सी यू हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, बड़े क्योंकि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है आपका। सो सर, tell us little more about the factory, the manufacturing setup that you have. So I'll just give you a history of our organization. So it has been started from my father's time, from 1965. So you're a second generation? We are the third generation. Oh, third generation. Yes. So my uncles and all were the second generation, which took up the business around from 15 years later. Okay. We started our first facility, that is in Kalamboli, near in Kamote. Okay. Which is nearby only. Yes, it's around 40 kilometers from here. So that was started in 96. And we started with very small hammer, a very small setup, and slowly we kept growing over the years. So we have around 3 hammers over there. That's Just a smaller place. When you called hammer, what is hammer? So these are basically conventional closed die forging hammers. Forging. Yeah, these are forging hammers where you have a process of closed die forging. Okay. So over there we do jobs right from 1 kg up to 120 kgs. Okay. And so that's a smaller. It's a smaller facility because you have now you're in this facility, you are seeing the bigger jobs, so that's why it looks smaller. But for us that was the big thing. And eventually we kept brainstorming and seeing how we need to grow and ensure that we sustain our business. So we planned to set up this particular facility. This is a ring rolling plant. Okay. We have 2 big equipments. One is a 3,500 ton press. Okay. And we have a 3.5 meter ring rolling mill. So whereby we graduated from doing more products from flanges. So today our portfolio caters not only flanges. Okay. So we do a lot of jobs which are which are in the similar industry, which cater, like if you see, this is a self-reinforced nozzle. Yeah, we just saw this. Exactly. Yeah. This is a self-reinforced nozzle with a very critical application. Correct. So similarly in various grades you will find them. There's stainless steel, carbon steel. So we do all of these grades. So you supply cross industries. Actually, not limited to oil and gas. No. So we've increased our portfolio, and now we've slowly started getting into the engineering industry, the heavy engineering. We are doing certain jobs which are related towards the railways also, Indian Railways, and parallelly we are again focused and getting registered with the defense as well as aerospace. So that is our next foray, Okay. So can you name few of the clients, esteemed clients that you are catering to? So all the Bharat Navratnas, we are working with them. So ONGC, Engineers India, oil. So they use these in exploration and transmission also. Every place wherever piping is applicable. Okay.
So my next question is regarding the capacity. Yes. Tell us a little bit more about what is the installed capacity that you have and how much you are utilizing it currently. Yeah, so currently both the plants consolidated, we have a 12,000 ton per annum capacity. Oh, However, the forging capacity I'm talking, okay. that we are utilizing to around 40%, 30 to 40% at this plant as well as Kalamboli. So what is the reason that the 60% capacity is still unutilized? Though you have a good capacity, it seems a good capacity. Yeah, so in we are terms not of forging. shortfall on capacity on forgings right now. Yeah. So larger jobs, we have more capacity which we can immediately undertake, and for that we are always looking into more jobs, you know, whereby we can get into contract manufacturing to increase the productivity. However, when you look at manufacturing, it's if as you've seen the entire plant and process. So forging is one aspect of it. Yes. Thereby processing is another aspect. Correct. So our entire focus is to ensure and grow our processing capacities with more of automation. So you don't. There is no need to increase the forging capacity. At this point in time, and in this plant, we are not planning to increase the forging capacity per se as far as ring rolling is concerned. We need to increase the processing capacity, and we are looking at more of automation in equipments like VMCs, bigger machines, so that we get exclusivity, you know, in process time. So the lesser the process time. So I guess is that the reason that you're coming out with an IPO and raising fund? Yes. Is that the object of the issue? The primary object is to ensure that we increase capex In the process. in the whole process. Okay. So our objective is to increase the capex for plant and machinery, get sophisticated equipments, get more into automation. Currently, even what Kalamboli plant does, we want to modernize the entire plant's manufacturing facility. So thereby reducing the costs as well as increasing productivity. And parallelly, we want to, as I've explained to you, that we are an IMS certified company. So it's Tell us a little bit about this IMS for our viewers. So IMS is basically it's an integrated quality management system. So ISO 9000 are your basic requirements. However, we are registered, we are certified under ISO 14000 as well as OSHA's. That is for ISO 14000 stands mainly for environment. Okay. And your 18000 is for health and safety. A lot of greenery inside the campus. So that is one most important factor what we need to give back, you know, to the environment. That's a very good gesture. So let us talk a little bit more about the financials now. What was your top line in the last year that you closed? Also the bottom line, and after this fundraising and the capex that you once you complete, what will be your targeted sales? So currently we closed in last year at 110, and hopefully this year we should cross 120. Okay. And as far as when we look at enhancement of our plant and machinery, the capex and everything, we would certainly look at minimum 30% growth per year. Per year. Yeah. And how much time will it take once you receive the funds to commission the project? Certain kind of equipments are readily available. Okay. So which can, you know, get immediately implanted and processed. Certain of them would require a period of 6 months to 8 months for, you know, the implementation schedule. So maybe a year later we'll see very quick results. So 6 months definitely we'll see faster results, and mostly when we look at order book situations and everything, so technically it runs always between 12 to 16 weeks. Okay. So by the end of the latter half of the FY for 24-25, we could see the numbers. Yes, you'll see gradually the numbers increasing. Tell us a little bit more about the order book. I mean, how it stands at. So currently the order book stands between 40 to 45 crores, which probably we should clear off till March. Okay. And out of which around 30% is nearly exports. Okay. So 30% of our routine business caters to exports. So we are well diversified. So the diversification is there as far as not only dependent on the domestic, but it's into export markets. Plus we have reduced our
lever it towards from the oil and gas, slowly getting into engineering and all other fields. So the next most important factor for us to get registered and start working towards, is the defense and aerospace and all these other industries. So you'll venture out in different. Absolutely, wherever possible. Wherever possible. So last few questions before we end. Since you are coming out with an IPO, you'll have new investors, new shareholders. They would always like to hear about the vision of the promoters. So give us a 5-year vision or a 3-year vision. Where did you want to take Paramount to? So our vision always, it has been to grow and grow organically. We've always grown organically, and over the next 5 to 10 years, we want to see us amongst the top 5 to 10 players in India. In the forging? Yes, in our steel forging industry and in our products, mainly our products, because when you say forging, it's very, very big. It's very big. So yes, that is what our vision is, and we would always, want to share however our growth path is, because as we have grown over these last 30, 40 years, so along with whosoever partners with us. So there is always a USP of every product in this world, right? So will it be for your product also, right? Correct. So if I had to ask you what is so unique about your product or what is so unique about your company, the camera and the audience is yours, you can just say. Yeah, I mean, as far as product is there, we make sure that every product complies to whatever international national standards are there, with all requirements from all respects. We have a very stringent quality system, and post that we certify it, so we ensure that every product goes defect free to the client, and there should be repeatability, which we always have had. Most of our clients are all 15-20-year-old clients. So repeatability as well as development of new customers. We have a personal touch. We do share personal touch with the customer, because many a times, the customer always wants to have a little bit of extra, with the organization. So we do share that, that would be a USP, which always we understand that relationship, and that is how we've maintained it and brought it up so far. Yeah, that's so nice. When you have repeat customers, it always shows that you have built the trust among them. True. Right. So many congratulations and all the best for your upcoming IPO. May you reach your target soon and complete the vision that you have for your company. All the best wishes from us. Thank you so much. Thanks again. Thank you. So friends, ये थे मिस्टर अली, पैरामाउंट के MD, जहाँ हमने जाना कंपनी क्या बनाती है और कंपनी का क्या बिजनेस है। कंपनी जल्दी से IPO लेके आने वाली है, और मिस्टर अली ने ये बताया कि वो IPO प्रोसेस से वो कहाँ यूटिलाइज़ करने वाले हैं और क्या रिफ्लेक्शन आएगा उसके नंबर्स में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टॉकनॉक्स में लॉगिन करके कंपनी को ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आप इंटरेक्ट कर पाए कंपनी के मैनेजमेंट से। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नई कंपनी के साथ। तब तक अलविदा, खुश रहिए, धन्यवाद। शेयर करना मत भूलिए।